Honorable Bindeshwar Pathak sir, who is the founder of Sulabh International and Padma Bhushan, is an Indian sociologist and social entrepreneur. Presented with the Lal Bahadur Shastri National Award for the Excellence in the Public Administration, Academics and Management in 2017. Energy Globe Award, Dubai International Award for the Best Practices, Stockholm Water Prize 2009 and Legend of the Planet Award from the French Senate in Paris. He is a brand ambassador for the Swachh Rail Mission of Indian Railways. Sir, you are of much use to the Public Health Department. I appeal you, sir, you can have this model in Public Health Department hospitals, sir. So we are having almost 512 hospitals in Public Health Department, wherein we can have discussion and we can launch this model for the relatives of the patients. In government hospital setup, sir, what happens, the patients remain admitted and so many relatives are just wandering here and there, or they are sleeping anywhere. They are not having the facilities for these toilets and all. So if we can do through CSR, at least pilot in some of the bigger hospitals, so that will be of much help, sir. So I will invite you for a presentation from your side, sir, on this Sulabh International project. And Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Health Minister, Honorable Sri Arun Kumar Jha, IAS, former Secretary, Government of India, Mr. N. Naveen Sona, IAS, Secretary, Public Health, Dr. Dheeraj Kumar, IAS, Health Commissioner, Dr. Sanjeev Kumar, IAS, Additional Commissioner, MCD, Dr. Rajat Jain, Dr. Ravikant Singh, Srimati Pravina ji from Boeing, Dr. Rahul, Dr. Dhavant Kumar, Dr. Nazreen, and all honorable members of the Toilet for All, for you, Dr. Manjula Kambre, Dr. Meeta Vashi, honorable distinguished and participants. The time is short, so I will go in detail. Just I will speak about few points, and it is related to public health. And first thing I would say, what I will carry forward from here today. One is the propagation of the idea of giving folic acid to girls before marriage and after 2 months of pregnancy. This will certainly help, and in this sector, less work has been done. This is required. So this folic acid propagation, certainly Sulabh will take up this cause, and among the parents, we will say that you can give them folic acid before the marriage and after pregnancy. And all the things you have talked about, the health and hygiene. So already we have talked about, and I cannot do more than that on the subject. So better I would say that sanitation has linkages with health and hygiene. Ago, I have got a report, if you ask, I can give you, that in London, 11,000 doctors were asked to vote, which is most important. And out of 11,000, about 2,000 voted for sanitation. That is the highest vote. Pediatrics came second, and penicillin, the most valuable life-saving drugs, came third. That shows that the doctors in majority gave their opinion that sanitation is very paramount. I have moved the mountain in this sector of sanitation in India. We had problems both in India and abroad also.
In Europe, they used to throw human skater on the street, and they were unable to walk, both in London, New York, other city. So the high heels was developed. At that time, high heels used to be used by both male and female, but now only being used by female, because it was unable to walk. And in America, the farmers used to come and collect human skater in the night and use them as a fertilizer. So it was called night swab. Including diarrhea, dysentery, hookworm, ringworm, more than 50 diseases are caused because of defecation in the open. So this was very important to tackle the problems of sanitation. In London, 19th century, asked the government of Britain that unless you provide safe and hygienic disposal of human waste, we cannot control the cholera. And therefore, the sewer was laid on large scale in London. The work started in 1832. Second city was New York, 1860. And in your country, Kolkata, now they say Kolkata, was the third city in the world to have the sewage system. And do you know what is happening today? Even today, total sewage discharge is the subject of public health. 72,000 million liters is discharged per day. And to treat them, you have capacity only 36,000 ml. You have half capacity officially. And how much you treat? Only 28,000 ml per day. So, by this technology, the sewage system, it was not possible to solve both the problems of defecation in the open and manual cleaning of night soil by untouchables. Though they did good work, but they had to feel the face humiliation, insults, and drudgery. Gandhi was most concerned about the subjects. So this is very important, that this technology, the sewage system, is costly in construction, in maintenance, and requires enormous quantity of water to flush. When Gandhi came to lead the freedom movement from South Africa in 1919, he said, sanitation, I want sanitation first and independence later on, to save from the slavery. And he's saying that no, I want first sanitation and then the independence. And he wanted to solve both the problems. The time is very short, only 7 minutes, so now I'll leave it. So Gandhi wanted to end the practice of defecation in the open and also to stop the manual cleaning of night soil by the untouchables and to bring them in the mainstream of the society. So the government, non-government, semi-government, social workers, they all tried to find out the solution. Again, I am leaving detail. So I joined Bihar Gandhi Centenary Celebration Committee in the year 1968. I went and lived in the colony of untouchables to build rapport with them.
I invented the technology. Somebody in the inaugural was talking about the NGO trying to get money and just to eat away for their own use. Yes, this is correct. But for which NGOs? Those who know English better, they can speak in English, influence to you, get registered in the society, and he can get donation, grant from the government easily because he has a contact. But not to the poor NGOs in India. And India, government did not try that NGOs can change the face of this country if you work in close cooperation and collaboration for which you are sitting today. But Dr. Rajat perhaps, he spoke about the Mother Teresa, that we should work together, then something can be done. And same thing, there is a theory in anthropology that psychic unity of mankind and parallel growth of inventions. So, what Mother Teresa said in 1980, our Chief Minister of Bihar, in 1970 he said, the social programs cannot be implemented by the government or the NGOs alone. So both, if they work together, then programs can be solved, the problems can be solved. And Mother Teresa certainly is no more now, but I am here before you because of the product of your Chief Minister's opinion. So that is most important, that you cannot do everything in the government because you have limitations. Even if you want to do something, you asked one officer to remove this table, he will take time. Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, he went and started cleaning a sea ghat in Varanasi himself. So, we also went there. Pranjal Yadav, he was collector there at that time. He asked me, "Oh, Dr. Pathak, save our prestige. Prime Minister wants to do in 2 months. In government, do you know the procedure? It will, even 2 months, you cannot complete the tenders. So only you can do." And we spent about 1 crore rupees from our fund. Yes, now also okay. अब हाथी को बुला दिया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट नहीं अपने हाथी बुलाना चाहिए। Anyway, तो चाहे हिंदी में जल्दी खत्म हो जाए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, 1 करोड़ रुपया लगा के और 2 महीने के अंदर 80 घाट को साफ करके और प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने फोटो भेज दिया। और प्रधानमंत्री जब दिनकर जयंती में भाषण देने आए, हमरी छोड़ने गए उनको उनके साथ, तो गाड़ी पर बैठ गए थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से उतर करके आए और हमको आशीर्वाद दिया, ये पाठक तुमने करा दिया इसको, थैंक यू। तो कहना क्या है कि यदि सरकार हमारे काम में क्या है, हम टेंडर नहीं देते। आज के जमाने में बिना टेंडर का काम मिलना तो असंभव, कोई सोच भी नहीं सकता है। और हम कहते भैया हम तो टेंडर नहीं देंगे, टेंडर माने हेरा फेरी, हम नहीं करते। हम तो एक गिलास का दाम 4 रुपया है तो 4 रुपया 2 ना देंगे, 4 रुपया गिलास का दाम और 2 अपने लिए खर्चा के लिए, चाहते तो करवा लो, नहीं चाहते मत करवाओ, बात खत्म हो गई। सोना बिकता है आजकल 57,000 कितना 60,000। अब टेंडर हुआ भाई 60 हम 10 ग्राम सोना चाहिए, तो अब दाम 57,000 उसका असली दाम है,
कोई कहता है हम 50 में दे देंगे, कोई कहता है हम 40 में दे देंगे। तो 40 में सोना कहाँ से लाओगे? वो क्या सोना होगा? वो तो पीतल ही मिलेगा। तो ये है कि जो प्रोसीजर है, काम करने का जो तरीका है, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। तो समय कम है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि बोइंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 157 कंपनियां 160 के आसपास है कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें एक बोइंग भी है, और बोइंग की तरफ से परमीना जी का बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, स्कूल टॉयलेट में भी, पब्लिक टॉयलेट में भी, और जो स्कूल चलता है उसमें भी। तो ये कहने का मतलब है कि CSR का फंड जो है, ये बहुत पहले राजाओं के द्वारा, पहले सेठ लोग होते थे, फिर राजाओं के द्वारा, फिर सरकार, दोनों पैसा देती थी, विकास के लिए भी और वेलफेयर के लिए भी। बाद में जो 6th कमीशन से जो पैसे की कमी होने लगी, 7th कमीशन आते आते तो सरकार ने कहा मेरा पास पैसा नहीं है, जहाँ जाऊँ म्यूनसिपैलिटी में तो ये पैसा अपना लगाएंगे क्या? नहीं, हम अपना कहाँ लाएं, तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक बूंद है, CSR जो है इस देश के लिए एक वरदान साबित हुआ है कि जो पैसे वाले हैं, जो कंपनियां हैं, वो आगे अब आ रही हैं, और सरकार ने कुछ उनको थोड़ा बजटरी भी कर दिया है। तो इससे क्या है कि CSR से स्वास्थ्य की समस्या नहीं, जितनी समस्याएं हैं इस सबका समाधान निकल सकता है, क्योंकि उसमें 20,000 करोड़ तक के पैसा आता है, अब तो बढ़ ही रहा है। तो उसमें क्या है कि जहाँ जहाँ सरकार कराना चाहती है काम, चाहती है कि समाज का काम हो, लेकिन पैसा नहीं है, वहाँ अब CSR फंड आ जा रहा है। तो जो कंपनी के लोग हैं, धनी लोग हैं, वो NGO और कोई भी सरकार, ये सब मिल करके, तीनों चारों मिल के यदि काम शुरू हो गया है इस देश में, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं समाप्त करने के पहले एक बार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं, HIV के डॉक्टर हैं, और हमसे 10 वर्ष पहले मिले थे, पटना में आए थे, दिल्ली में आए थे हम लोग का ये देखने के लिए कैंपस, और अपने हृदय से सेवा कर रहे हैं। जैसा HIV के डॉक्टर हैं, ये तो मल्टी मिलियनर हो सकते थे डॉक्टर में, और बिलियनर हो सकते थे, लेकिन आज इतनी सेवा करके मन भर रहा है। डॉक्टर नाजरीन को लगाया हमारे देखभाल के लिए, उनका इतना बिहेवियर अच्छा है, इतना बिहेवियर अच्छा कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तो ये सब जो है, ये जो सेवा है वो भीतर से आता है, हार्ट से आता है, वो माइंड से नहीं आता है। कैसे रुपया देंगे तो आप सेवा अच्छा से कर देंगे, वो तो एक तरीका है, लेकिन असली तरीका है जब बात दिल से आती है, मन से बात आती नहीं है। तो खैर समय दिया, आपने पुरस्कार बढ़ा दिया हमको, तो अब तो बंद करना ही चाहिए। लेकिन फिर इसमें जितनी बातें हम भी लेके आए थे माइक्रो सुपर करने के लिए, तो गाना है एक, हाँ मेल हम कर दें, ठीक है, ये अच्छा कहा आपने, हम सबको मेल कर देंगे ताकि आप इसको जान सकते हैं। अभी रीडर डाइजेस्ट में भी स्टोरी आई है, बहुत अच्छी स्टोरी आई है, उसको भी आपको भेज देंगे, आप देखिएगा। और लेकिन चलते चलते मेरा कहना है, अभी तो दिल भरा नहीं, तो आप लोग से मिल के बुलाया, आप लोगों ने अपनी बात कहने के लिए भी सम्मान भी दिया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। और सब लोग बैठे हुए हैं, दो आए हुए सब लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। So, as I said, sir, Bindeshwar Pathak sir, Padma Bhushan Bindeshwar Pathak sir is a legend, and we are very lucky कि आप सर आए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नवीन सोना सर से सर को मोमेंटो एंड सॉल देकर फेलिसिटेट करें। Thank you so much.